A very good morning, dear kids. Welcome back after the Diwali break. I hope that you all had enjoyed Diwali. So now it's time to back to your studies. We will be starting with our final term course. Chapter number 11, that is plants, our friends. Everyone open your book and take out page number 53. Take out page number 53. Plants. We all know plants. They are green in color. These plants, they are our friends. How the plants, they are our friends, this you will let you know when we will read this chapter. So let us start. Plants means पौधे. Our, हमारे, friends means दोस्त. We see many kinds of plants around us. हम हमारे चारों तरफ बहुत सारे plants देखते हैं. Like in your home you are having tulsi plant, money plant, different plants you are having. You are having flowering plants like rose, jasmine. Yes. So we see different kinds of plants around us. Some plants are big. Some means कुछ plants बड़े होते हैं and some plants are small. Some of the plants they are big and some are small. Now we will be studying one by one. First about the tree. What is tree? पेड़. आप सभी को पता है पेड़ क्या होता है. जैसे आम का पेड़, जामुन का पेड़, आप पेड़ से तोड़ के खाते हैं ना, आम, जामुन, कोकोनट ट्री. सो दिस ऑल आर ट्रीज. सो व्हाट आर ट्री? पेड़. अगर आप पेड़ को देखते हैं तो वो साइज में कैसा होता है? बहुत बड़ा. सो नाउ लेट अस रीड फ्रॉम द बुक. अ बिग एंड टॉल प्लांट इज कॉल्ड ट्री. It has many branches. The tree has many branches. Branches क्या होती हैं? शाखाएं. In your book you can see the photo of the tree, of the people, jamun and the coconut. So a tree has a hard and thick stem. जो पेड़ होते हैं उनकी स्टेम बहुत हार्ड और थिक. थिक मीन्स मोटी होती है. This is called the trunk. What we call it? We call it as the trunk. Now I am drawing a tree here. This is the trunk of the tree. This is hard. This one is the trunk, or we can say stem. T-R-U-N-K, trunk. Now let us study about the examples of the tree. What are the examples of the tree? Mango, banyan, peepal, jamun, coconut trees. These are the trees. Many trees can live up to 100 years. Trees 100 years तक जिंदा रह सकते हैं. Next we will study about the shrub. So turn the page everyone and come to the page number 54. Turn the page and come to the page number 54. Shrub. What is shrub? S-H-R-U-B. Shrub. What is shrub? Shrub is much smaller than a tree. Shrub tree से छोटा होता है. It has thin and hard stem. इसकी stem कैसी होती है? Thin and hard. A shrub has many branches. इसमें बहुत सारी branches होती हैं. These branches grow close to the ground. Close to the ground means जमीन के बिल्कुल पास से ये grow करते हैं. What are the examples of the shrub? You all had seen the rose plant. आप देखते हैं rose plant, आप गमले में हम उगा सकते हैं rose plant को. So shrub, this we can grow in a pot. गमले में हम shrub को ग्रो कर सकते हैं, बट हम ट्री को गमले में नहीं ग्रो कर सकते. वाई? बिकॉज ट्री they are large in size and shrub they are small in size, so we can grow the shrub in
pot. What are the example? Rose, cotton, mehendi. These are the shrub. Next, we will study about a herb. H-E-R-B. Herb. What is herb? A herb is very small plant. बहुत ही छोटे plant. जैसे mint. What is mint? पुदीना, spinach, palak, rice. This all are the herbs. Most herb live only for a few months. इनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ कुछ महीनों की ही होती है. सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है? ट्री की. ट्री it lives up to 100 years and herbs they live only for few months. Next we will study about the climber. What is climber? A climber has a weak stem. It cannot grow straight. क्लिम्बर की स्टेम बहुत वीक होती है, इसलिए वो स्ट्रेट नहीं ग्रो कर सकते. द क्लिम्बर दे नीड द सपोर्ट. इनको सपोर्ट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू स्टैंड. वाई? बिकॉज द स्टेम इज सो वीक. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लिम्बर? पी, बीन, मनी प्लांट. मनी प्लांट आप सभी ने देखा होगा. मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग मनी प्लांट एट योर होम. मनी प्लांट आपने देखा है बेटा, उसकी स्टेम कितनी वीक होती है, उसे सपोर्ट चाहिए होता है. उसे हम धागे या थ्रेड से वी यूज टू टाई इट, देन ओनली द मनी प्लांट इज एबल टू स्टैंड. द नेक्स्ट वी विल स्टडी दैट इज अबाउट द क्रीपर. CREEPER. That is creeper. What are creeper? A creeper has a very weak stem. Their stem it is very weak. It grows along the ground. जमीन के साथ ही ये ग्रो करता है. What are the example? Watermelon. Watermelon तरबूज. हम गर्मियों में खाते हैं. तरबूज कितने बड़े होते हैं साइज में. They are the example of the creeper. Watermelon, then melon and pumpkin. Creeper, they all are the creepers. Bottle gourd. What is bottle gourd? Lauki. लौकी, तरबूज. What is pumpkin? पेठा, जिसकी आपकी मम्मी सब्जी बना के देती है, बहुत बड़ा होता है साइज में. So this all are the example of the creepers. So in this class we will study only up to here only. So let us revise this. एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें. Plants are our friends. Plants क्या होते हैं? पेड़ पौधे. ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स मीन्स ये सब हमारे दोस्त हैं. कैसे? ये हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज द ट्री. व्हाट इज द ट्री? ट्री कैन लिव अप टू 100 years. Tree it is having the stem. It is thick. The stem we call it as the trunk. What are the examples of the tree? Mango, peepal, jamun, coconut. So many examples. Shrub, they are smaller in size than the trees. Example, rose, cotton plant. Herbs, they are very small plants. The example are the mint, that is pudina, spinach, palak, rice. Climber, the stem it is very weak. The example are the pea, bean, money plant. And the last we have studied about the creeper. They are having very weak stem. The example is the watermelon, pumpkin and bottle gourd. Lauki, we call it as the bottle gourd. So up to here we will be studying, and rest of this we will study in the next class. So take care everyone. Have a nice day and God bless you all.